Okay. So, are you from which college? Sir, I am from Marine Engineering and Research Institute, Kolkata, sir. Okay. So ये हमारा इंटरव्यू सेशन होगी फर्स्ट ऑफ ऑल. Yes, sir. सो इस इंटरव्यू सेशंस में 2 पार्ट होगी. फर्स्ट पर्सनल, सेकंड टेक्निकल. आफ्टर दैट मैं आपको ब्रीफ करूंगा. ओके. अपनी बेस्ट दूंगा. ओके. किन किन फैक्टर्स पे आपको वर्क करनी है. क्लियर? Yes, sir. So shall we proceed our interview session? Yes, sir. Okay. So yes, Adit, tell me about yourself. Yes, sir. Sir, my full name is Aditya Gupta. I come from Sultanpur, Uttar Pradesh. I have done my schooling from Navodaya Vidyalaya, Sultanpur. My father is a businessman. My mother is a homemaker. And in free time, sir, I love to do blogging. I'm also interested in traveling. That is all about me, sir. So what type of blog you made? Sir, I write about social issues, technical things. Basically, I most about social issues and the problems in our society, sir. Okay. So what do you think? What are the major problem nowadays in our society? Our society is facing major problem. What are those major problems? Sir, some of problems are uneducation, sir. Education is quite important for everyone. So uneducation is a major problem. Overpopulation is also a problem. And some more problems I had talked about, sir, in the recent COVID times, sir. I was writing about a lot about COVID thing, the migration that happened in these years, sir. So I was writing about this. So the poverty is also a problem for the society. So the gap between the higher class and the lower class is also a big problem for the society. So these are the several problems for the society, I think, sir. Okay. So tell me, Aditya, why you choose marine engineering course? Yes, sir. Sir, I wanted to do mechanical engineering. I always loving with the machineries. When I used to see machineries on my college, on a school, whenever I see, so I was fascinated by them. I wanted to work with them. But sir, when I was in class 12, there was a career counseling program in my school, and some people from merchant navy with white uniforms came, and they were telling about the field. They told me that I can work with the machineries with bonus things. There were like the salary package was there, the uniform, the adventure thing was there, and it was not a 9 to 5 job. So there were bonus for me. Rather than being the mechanical engineer, there was a lot of more to do in the marine engineering. So sir, that I choose that I would go with this field, and then I choose merchant navy, sir. Okay. What are your weaknesses? Yes, sir. Sir, when I came to this college, I was a little shy. I was not good in public speaking. But sir, in the recent year, I have worked hard and I have participated in many debates and speech competitions. So I have improved a lot, sir, and I have won many prizes as well. So sir, public speaking was my problem before, sir, but I have now improved it a lot. Okay. What are your ultimate goals? Yes, sir. Sir, my ultimate goal is to serve my country, to my society, by becoming a marine engineer. And after that, whatever the future goals would be, I would like to serve the poor. I would like to serve the society, sir. The people who are not capable of, they are underprivileged. I want to serve them so that they could get the place in society, sir. So where do you see yourselves after 5 to 7 years? Sir, after I want to learn the basics and all the advanced things of the field. I want to be a competent marine engineer, and I would like to see at the higher position, like third engineer or the chief engineer in next 5 to 7 years in your company, sir. Okay. Good. So tell me, which is your favorite subject in marine engineering course? Sir, my favorite subject is marine internal combustion engines. Marine internal combustion. Yes, Very sir. good. Tell me the difference between ME-B engine and ME-C engine.
Sorry, sir, can you repeat the question? Tell me the difference between MEB engine and MEC engine. MEB and MEC. Sorry, sir, I can't recall it at the moment. Okay. What is intelligent engine? Yes, sir. The intelligent engines are the new days engine, which the most of the things are electronically controlled. We don't the valves opening and the other mechanical things that we are using previously with cams and other mechanism. They are now being used by the electronics, and it is useful that the injection timing has been improved. So it has resulted in a great combustion efficiency. Due to the proper injection of fuels and proper timings of fuel injection and other things that we are doing mechanically in the intelligent engines, it is done by electronically, and that has improved a lot in the engines, the efficiency of engines. Okay. So how it improve fuel injection concept? So there are solenoid valves and the mechanisms are involved which work electronically at the specific moment, and that's way they inject the fuel at the right moment without delay. They work for a very fine time interval for a second, for a millions of, for a part of second, so that they work very minutely and very finely, and thus they improve the efficiency injection timings. Means with respect to load, right? Yes, sir. Tell me VIT. What is VIT? Sir, VIT is variable injection timings. So in this VIT system, we use in the valves are variably fuel is given to the system variable in the variable ratio whenever they need it for the changing time, for the changing quantity is delivered to the system, sir. And any other thing? That's all I could remember, sir. Yes. Okay, not clear, but it's okay. So tell me about difference between 4-stroke engine and 2-stroke engine. Yes, sir. So the basic difference is that in the 4-stroke engine we use 4 sequences for power generation, while in the 2-stroke engine we can power generation 2-stroke. The 2-stroke engines are large engines. They are used for they are slow speed engines, while the 4-stroke engines are medium speed engines, and they are compact engines. We are using 2-stroke engines for the propulsion system, while the 4-stroke engines are used for uh, generate electricity for the auxiliary purpose. The flywheel which we are using in the 2-stroke is smaller, which we are using in 4-stroke. The 2-stroke engines are the cam to crank ratio is to 1:1. The camshaft to crankshaft ratio. Yes, sir. Is it was to 1 is to in the, while in the 4-stroke engine is it 1:2, sir. And the power generation is frequent in the 2-stroke, while it is delayed in the 4-stroke. That is all I could remember about this. So tell me why in 4-stroke engine flywheel is larger in size. Yes, sir. That's that I mentioned, sir, that the frequent power is generated in case of 2-stroke engines. It is generated after every second stroke. So we don't need a flywheel to compensate the load, that is the RPM. For compensating the RPM, we don't need a bigger flywheel. While in the 4-stroke, it is generating after 3-4 strokes. So that's why we need a bigger flywheel in case of 4-stroke engines. How piston lubricates in 2-stroke engine? Yes, sir. The piston lubrication is done by lube oil, sir.
and the lube oil comes from the crankshaft and it goes through the holes which goes through the connecting rod and it goes to the whole part. There are passages provided for the lube oil to go to the piston, and it goes all of the under spaces of the piston, and it cools also and it provides lubrication also. And so there is nothing. The cylinder walls are the cylinder lubrication is done, and this is also be done with the piston lubrication. So both lubrications are same, piston and edge cylinder, or cylinder lubrication is separate from piston lubrication. Sorry, sir, I don't know about this. Okay. Okay. Tell me the material of cylinder liner in two-stroke engine. Sir, it is a cast iron. Sir. Why? Sir, cast iron, the both piston rings and liner is made of cast iron, and because it wears a lot, it faces a lot of friction while rubbing through the rings. So No. There is some specific reason for that. Why it is only, yes, actually it is made up of spheroidal cast iron. And why it is so? You don't know, right? no, sir, yes, sir, I don't know. Sir. Okay. Suppose I will giving you one case. Okay. Clear? Suppose, Yes, sir. yes, you have a piston, and at the Yes, sir. top head of piston, or simply at the top of the piston, some carbon particles are accumulated. So in what Yes. way this reduces the whole engine efficiency? Yes, sir. Sir, first of all, it will reduce the space for combustion. The secondly, the fuel mixing place would be reduced. For the mixing of fuel, the place would be reduced. Also, sir, it will when the fuel will come, it will make it dirty. So also it will result in and when it will accumulate after this, it will go through all the liner and all the places inside the combustion chamber in the cylinder liner. So it will also will reduce the efficiency of combustion. Okay. What is power factor in induction motor? Define power factor. Sorry, sir, I have not read about this. Okay. What is difference between motor and generator? Yes, sir. Sir, motor is a mechanical device that generates mechanical work from electricity, while the generator is a device which converts mechanical work into electrical energy. Sir. They both are opposite to each other. One converts electrical to mechanical, while other converts mechanical to electrical. Sir. So how electricity produced on board ship? So electricity is produced to the auxiliary engines, which are four-stroke engines. So they are diesel generators that we use to produce electricity. Sir. So how many main generators are present on ships? So there are two main generators and one emergency generator present. What is the purposes of emergency generator? Sir, in case the main generators are not working, there is a flooding or something like blackout condition is there inside the ship, then in that case we can use the emergency generators. Okay. So do you have any idea about the SOLAS regulation regarding emergency generator? What are those regulations? Yes, sir, I have read about them, but I could remember is, sir, that it should be able to start, give the 12 kick start to the engine. Some more point I'm not, I can't recall it, sir. There are 2 or 3 more points that I can't recall at the moment. Okay. What are the It should be difference? out, excuse me, sir, it should be outside of the all machinery space. And Okay. yes, sir. And why it is so?
Because sir, if the engine room is flooded or something is there, so it should be outside of that place, so that we can use that place. If something hazard happening in the machinery space, then it should be outside of there. That's why we can use that. Okay. Tell me the difference between attemperator and desuperheater in boiler. Sorry, sir, I have not recalled this. Okay. What are the different boiler mountings present in boiler? Yes, sir. The main steam stop valve is the I could remember all the lines. Sir. Main steam stop valve, auxiliary steam stop valve, blow down cock, scum blow down cock, and two safety valves are there, and gauge glass is there. How your blow down valve is differs from scum valve? Yes, sir. Sir, the blow down cock is for the send that is below the boiler, the dirty particles which has been settled inside the boiler. So they are removed through the blow down cock. While there are some debris which are floating on the boiler surface, so they are not being settled down. So for them, at the water level of the water drum, so scum blow down cock is there. So it removes them from the floating part, the floating debris. So these are two differences. Okay. Which fire extinguisher is best suited for electrical fire? So electrical fire, we dry chemical powder portable extinguisher, DCP. Sir. Okay. Why not CO2? Because sir, CO2, whenever CO2 is used, it also is it leaves the place. It can cause a loss. It can cause a harm to the electrical equipments. It is not easily removable when we. Yes, sir. Can harm electrical equipment or something different? So electrical wirings, it can make a layer on that electrical wires and all. Okay. What is sprinkler system? Sprinkler system, I don't know much about this, sir, but it is used for fire extinguishing. And when there is when there are heat detectors type like flame detector, heat detector, and one more heat detectors, when they find the temperature is not normal, then the sprinkler system works, and it removes the fire before it has been started. Okay. Yes. Tell me the difference between water tube boiler and smoke tube boiler. Yes, sir. As the name suggests, sir, the smoke tube boilers we have flue gases flowing through the tubes, and the water is surrounded by it. While in the water tube boilers, we have water inside the tubes, and it is surrounded by combustion chamber, combustion gases. So that's sir. Initially, the fire tube boilers came. The water tube boilers came later. The fire tube boilers were the generation of heat. The rate of generation of heat in the water tube boilers is slow, while in comparison to fire tube boilers. Sure. Are you sure? Sorry, sir. It is more in the fire tube boilers. It is less in the fire tube boilers, while it is more in the water tube boilers. Because the natural circulation of water in the water tube boilers, sir. Yes, sir. Which parameter? Which parameter are you talking? Which parameter are you talking about? Less or more? Which one is less or which one is more? Rate of steam generation. Rate of steam generation. More in which case? More in water tube boilers. Okay, and less in?
Fire tube boilers, sir. Are you sure? Yes, sir. Okay. And what is natural circulation of boiler? Natural circulation of water is, sir, in water tube boilers, we have two drums, steam drum and water drum. So whenever the water comes from the steam drum to the feed given to the steam drum, the water comes to the water drum, and it, since the warm water goes up due to its density, the low density goes up. So the high density water comes to the steam drum naturally, and it produces steam at a faster rate. So how water gets warm inside the tube? Yes, sir. Inside the tubes, the combustion chamber is there, sir. The chimney is there in which we use fire. We make with the use of fuel and all. We make a fire, and that fire makes the water warm. Okay. What is exhaust gas economizer? Yes, sir. So the exhaust gas economizer is used to make the steam while the engine is running condition. So the exhaust gas from the after returning from the turbocharger, we have a line that goes from the boiler, it goes to the exhaust gas economizer, and we are using that steam temperature to heat that water. It is of 80 to 90 degrees Celsius, and that we can use make the water heater, and we can use that while the engine is running. We don't have to use we don't have to fire the boilers. Okay. Okay, Aditya, expand the term SCADA, SCADA. Expand the term Yes, sir. SCADA, SCADA. CAD. Sorry, sir, I don't know about this. Okay. Explain the working principle of freshwater generator. Yes, sir. The freshwater generator works on the principle of reducing pressure to reduce the temperature, sir. So when we reduce the pressure, we can evaporate the things at the reduced temperature. So after cooling the water engine, Are the you jacket sure? water. Are you sure about working principle? Freshwater generate work on the principle of, you said, reducing pressure and temperature. Means we directly Reducing pressure. Yes. Sir, when we reduce the pressure. Just tell me, what are the different process to generate fresh water on board ship? What are those different process or principle adopted? What are those principles? Sir, we simply can boil the water and can generate the steam. We can generate the fresh water. We can simply boil the water and condense it. But in freshwater generator, sir, we use the jacket water, which is of temperature of 60 to 70 degrees Celsius to make the water steam. Because we reduce the pressure inside in the evaporator chamber, and that's the we can boil the water at reduced temperature due to the reduced pressures. So we use that jacket water and we make that water evaporate, and after that we cool it with the help of seawater, and then we can generate it. We can pass through it a selenometer. If it is less than 15 ppm, then we can use for the purpose of drinking. Means evaporator as well as condenser is there. Yes, sir. Right. Yes, sir. Yes, sir. So this process is called where both evaporator as well as condenser is there. First one, your seawater get evaporated, then again seawater goes to condenser, and again seawater gets cools with the help of seawater circulation. Means both Yes, sir. evaporation and condensation is going on. So what this process called? Tell me that. And this is what actually called the basic principle of freshwater generator. Do you have any idea? I can't remember the exact term, sir. Yes. In this system, both evaporation as well as condensation is going on, right? Yes, Are you agree? yes, Agree? yes, sir. Yes, sir. That is going on. So this process is called distillation process. Clear? Yes, sir.
Yes. Distillation, yes, sir. Yes. Now tell me why vacuum is created inside freshwater generator? Sir, when vacuum is created, then the pressure reduces, sir. For reducing the pressure, we have to make a vacuum. And any pressure less than the atmospheric pressure will be called vacuum, sir. So why vacuum is created inside evaporator unit? Yes, Why? sir. For water, the boiling point water is 100 degrees Celsius at 1 atmospheric pressure. Very good. So for water to reduce the temperature of water for boiling point, so we make the pressure below the 1 atmosphere, and that is called the vacuum, sir. Okay. So मैं यहाँ इंटरव्यू डन करता हूँ. Clear? Yes, sir. तो ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके मैं इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट करता हूँ. योर इंट्रोडक्शन पार्ट इज टू शॉर्ट. थोड़ी सी थोड़ी सी और Yes, sir. कोशिश करो 15 to 20 सेकेंड्स की पार्ट ऐड करने की. क्या ऐड कर सकते Clear? हैं सर? जैसे उसमें और क्या, जैसे नाम स्कूल बता दिया सर, और पेरेंट्स का बता दिया फिर. फर्स्ट ऑफ ऑल नाम, नेम. सेकेंड, वेयर आर यू फ्रॉम. Yes, ओके. sir. थर्ड, योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन. ओके. Yes, अभी sir. आप ग्रेजुएट हो नहीं तो 12th बोल लो. ओके. फोर्थ बोल सकते हो योर हॉबीज. ओके. इसमें अगर तुम अच्छे हो, एथलेटिक्स में अच्छे हो, तो उसको एक सेंटेंस से बोलना है. नॉट लाइक पूरी लाइक एक पैराग्राफ नहीं बोलना है, लाइक मैंने वहां स्पोर्ट्स खेला, यहाँ स्पोर्ट्स खेला. नो, एक सेंटेंस में उसको फ्रेम करो. हॉबी Yes, एंड स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स जो भी हो. ओके. yes, नेक्स्ट sir. इज ऑप्शनल रखो. अगर फैमिली के बारे में बताना चाहते हो तो बता सकते हो, नहीं बताना चाहते हो तो नहीं भी बता सकते हो. इसको ऑप्शनल रख सकते हो. मैं इसे मैंडेटरी नहीं मानता हूँ. Yes, क्लियर? sir. ओके. Yes, एंड नेक्स्ट जो है, ओके, खुद को 2 to 3 वर्ड में डिफाइन कर सकते हो. नोट सेंटेंस की भी जरूरत नहीं है. लाइक एक दो सेंटेंस में खुद को डिफाइन करो, और कोई एक दो अगर अचीवमेंट्स है तो वो ऐड करो. लाइक आपने बोला डिबेट है, अचीवमेंट. आप ब्लॉग्स हैं, ओके, तो ये ऐड कर सकते हो. क्लियर? तो ट्राई करो yes, इंट्रोडक्शन पार्ट 30, एटलीस्ट 35 सेकेंड एंड एटमोस्ट 60 सेकेंड और 70 सेकेंड्स तक होनी चाहिए. बट योर इंट्रोडक्शन पार्ट वाज टू शॉर्ट. ओके, तो मैं बोलूंगा प्लीज थोड़े से ऐड अप करो. yes, sir. क्लियर? यस. Yes, sir. नाउ, यस, नाउ सेकेंड थिंग, आपके टेक्निकल मैंने सब चीज कवर किया. इलेक्ट्रिकल्स थोड़े बहुत कवर किए, मरीन ऑक्सिलरी मशीन्स कवर, आईसी इंजिन्स कवर किया, फायर कवर किया. राइट? तो स्टिल मैं ये बोलूंगा, रिकमेंड करूंगा अपनी टेक्निकल पे आप थोड़ी और वर्क करो. क्योंकि ठीक है, आपने कुछ आंसर्स दिया बट कुछ आंसर्स नहीं दे पाया. बहुत ही बेसिक्स आंसर नहीं दे पाया. व्हाट इज पावर फैक्टर. ओके, व्हाट इज पावर फैक्टर इन इलेक्ट्रिकल्स. ओके, मैं ये एक्सपेक्ट करता था कि आप इसकी आंसर्स दो. एज ए फोर्थ ईयर कैंडिडेट, थर्ड ईयर कैंडिडेट, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए. ओके. एंड आर यू इन फोर्थ ईयर, राइट? फाइनल ईयर. Yes, sir. Finally, yes, sir. 2018 एंट्री, राइट? Yes, sir. ओके. तो यस, अगर आप 2018 एंट्री हो तो मैं आपसे ये क्वेश्चंस भी एक्सपेक्ट करूंगा. आप बता पाओ व्हाट एमी बी इंजन एंड व्हाट इज एमी सी इंजन. व्हाई? आप पूछोगे ऐसा क्यों? ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल, धीरे धीरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है. आर यू एग्री? ओके. Yes, तो sir. अभी क्या है, एमी इंजन काफी आ रहे हैं. ओके, आप कोई भी कंपनीज के वेबसाइट सर्च करो, उसकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे जाओ. क्या होता है सर? इसका फुल फॉर्म क्या होता है सर? MEV और MEC? MEB and MEC engines means M here stands for engine program, E for electronic engine, and here B refers for. अब दो चीजें यहाँ होती है, एक हमारी फ्यूल इंजेक्टर होती है, एक हमारी एग्जॉस्ट वाल्व होती है. ओके, बहुत ही मैं सिंपल में बता रहा हूँ. ओके, जो आप इंटरव्यू में बोल सकते हो. तो जो एग्जॉस्ट वाल्व होती है ये कैम ऑपरेटेड होती है, बट फ्यूल इंजेक्शन जो होती है ये इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड होती है विद द हेल्प ऑफ FIVA, फीफा वाल्व. Okay. Now, but in case Yes, sir. of ABC engine, C stands for compact engine. Here both exhaust valve as well as fuel injector ये electronically operate होते हैं. Clear? Yes, sir.
तो डिफरेंट डिफरेंट शिपिंग कंपनी अब क्या कर रही है, एमी इंजिन की तरफ जा रही है, ऑलमोस्ट जा चुकी है। तो अब आपसे एक्सपेक्ट करेगी कि आपको एटलीस्ट ये पता हो व्हाट इज एमी बी इंजिन, व्हाट इज एमी सी इंजिन, व्हाट इज एमी इंजिन। ओके, अगर आपको ये टॉपिक्स पढ़नी है तो एज ए टीएमई, ओके, एक्चुअली अभी आपको काफी ज्यादा डीप नहीं जानी है, बट अभी इंटरव्यू में पूछा जा रहा है, मैं डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स से बातें करता हूँ जो डिफरेंट डिफरेंट शिपिंग कंपनीज में इंटरव्यू देते हैं, जी वो सर, सर सारे आज भी सर बेसिन का इंटरव्यू हुआ सर, उसमें भी ये पूछा गया सर, ये फीवा और ये सब, फीवा और यस लीवा, एक उस तरह फीवा वो यस पूछा गया। पूछा ही जाएगा। मैंने काफी इंटरव्यू में लाइक अभी आपसे पूछा, बहुत लोगों से ये सारी क्वेश्चन पूछना, एंड मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा आप मेरे मैराथन लेक्चर्स देखो। ओके, यस सर। मैराथन लेक्चर्स में मैंने पूरी इलेक्ट्रॉनिक इंजन्स की एक सेपरेट लेक्चर्स लाई है, बहुत ही बेसिक्स लेक्चर्स। वो बेसिक्स क्वेश्चंस ही आपको टीएमई पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा टीएमई के लिए यस बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक इंजन में पूछेंगे नहीं। ओके, क्योंकि ये क्लास 4 एंड क्लास 2 की सिलेबस होती है। ओके, बट एज ए टीएमई आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए। लाइक अगर मैं आपसे बोलूं स्पेसिफाई द इंजन स्पेसिफिकेशन 6S90 एमई बी बैसी 7 G1 T2, ओके, तो ये आपको आनी चाहिए। ये एक्चुअली है क्या, इज द मीनिंग ऑफ 6, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस, व्हाट इज 90, व्हाट इज एम, व्हाट इज ई, व्हाट इज बी स्लैश सी, व्हाट इज 7, व्हाट इंडिकेट 7 ईयर, व्हाट इज G1, व्हाट इज T2 कॉन्सेप्ट, ये पता होनी चाहिए आपको। एंड ये सारी चीजें मैंने आपको मैराथन लेक्चर्स में समझाई हुई है। मैराथन लेक्चर्स जो है, ये लेक्चर्स जो मैंने रेफरेंस लिया है, ये लेक्चर्स नाउ अडेज, ओके, अभी कॉम्पिटिटिव कंपटीशन काफी बढ़ गई है, तो नाउ अडेज जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके रेफरेंस में लिया है, ना कि लाइक 2012 14 15 उनके रेफरेंस में नहीं लिया है। नाउ अडेज डुअल फ्यूल इंजन पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ओके, इलेक्ट्रॉनिक इंजन पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, आपकी इलेक्ट्रॉनिक इसकी नॉलेज अभी वीक है, और यस सर। कुछ भी वीक चीज को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये आपने स्ट्रेंथ में भी अपनी बताई थी, ओके, कि आपने पब्लिक स्पीकिंग इनहांस की। तो सिंपल है, आप इलेक्ट्रॉनिक यस इंजन्स को भी इनहांस कर सकते हो, नॉलेज गेन कर सकते हो। ओके, एंड थोड़ी बेसिक्स ऑक्सिलरी मशीन पे भी आप वर्क करो। ओके, क्योंकि आपने जो एक्सप्लेन किया फ्रेश वाटर जनरेटर, वो मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ। ओके, तो ऑक्सिलरी मशीन्स के भी आप लेक्चर सारे रेफर कर सकते हो, मरीन इंस्टीट्यूटर में काफी लेक्चर्स हैं। ओके, ऐसे इंजन्स की नॉलेज यस ठीक था, ठीक ठाक था। ओके, बट स्टिल आप वर्क करो। ओके, अच्छा, बाकी सब बताओ, और कुछ आप पूछना चाहोगे तो, एनी क्वेश्चन? नहीं सर, ये सर लेक्चर सारे सर, ये मुझे जैसे लगता है सर कभी कभी एडवांस है, जैसे कि क्लास 4 का है या क्लास, मतलब कि फिर सोचता हूँ कि एक्स्ट्रा पढ़ के क्या, क्योंकि टाइम तो है नहीं सर, और सिर्फ 1.5-2 घंटे का लेक्चर है सर आपका, मान लीजिए तो। इसीलिए तो मैंने मैराथन लेक्चर्स लाया है। ओके, आई यस सर। एग्री, मरीन ऑक्सिलरी मशीन्स में 80 वीडियो है, 80 वीडियोस है। ओके, यस सर। एंड मैं खुद एग्री करता हूं कि वो पूरे 80 आउट ऑफ 80 में 40-30 वीडियोस ही प्रॉपर टीएमई के लिए है, काफी वीडियो यस एज ए क्लास 4 एंड क्लास 2 के लिए है। मैं एग्री करता हूं। ओके, बट लाइक आप वीडियोस देख के भी आपको पता चल जाएगी, जहां पर मैंने लिखा है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फ्रेश वाटर जनरेटर, तो वो आपको देखनी है। ओके, कहीं पर मैंने लिखा है ट्रबल शूटिंग, ओके, या कुछ कंडीशनल क्वेश्चंस टाइप किया है, तो वहां पर आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, वो आप सर, वीडियो एक प्लेलिस्ट बना देंगे सर, क्या सर वो टीएमई के लिए एक प्लेलिस्ट हो जाए सर, वो टीएमई के लिए है ये, इस तरह का। ठीक है, आपके रिकमेंडेशन से मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है सर, लेकिन सर वीडियोस सर आपके बहुत हेल्प मिलता है सर, हम लोग लॉकडाउन में सर पढ़ नहीं पाए थे, मतलब क्योंकि घर पे ऑनलाइन मन नहीं करता था उस तरह का सर, तो हम्म काफी कुछ छूट गया सर, इलेक्ट्रिकल तो बहुत छूट गया सर मेरा खुद का, हम्म तो हम्म। हो सकता हो। और सर अभी हम लोग का रैंक 100 के बाद है, तो अभी नंबर कब आएगा आखिरी, मतलब जब, अभी तो स्टार्टिंग का चल रहा है सर, अभी 30-40 रैंक तक का चल रहा है, तो आखिरी में जब भी एमएससी अपॉर्चुनिटी आएगी। मिले, जब भी सामने अपॉर्चुनिटी आए, तो वो अपॉर्चुनिटी ऐसे खुद को प्रिपेयर करो तो वो अपॉर्चुनिटी बाहर नहीं जानी चाहिए, हाथ से नहीं जानी। यस सिंपल, मैं एकदम बहुत सिंपल लैंग्वेज बात करता हूँ, चीजें चीजें सिंपल बताता हूँ। ओके, अगर आपको, मैंने तो ये भी सुना है कि एमईआरआई में शायद 2 अटेम्प्ट होती है टोटल, यस सर, राइट? 2 अटेम्प्ट ही होती है, 2 इंटरव्यू 2 अटेम्प्ट। अटेम्प्ट होती है, यस। तो ट्राई करो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए। यस। ओके,
तो उसके लिए आपको पूरी जैसे प्रिपेयर कंपनीज का भी सर, कोई कंपनी ऐसे कोई टफ या इजी कंपनी होती है क्या सर? जैसे लोग बोलते हैं कि सेवरॉन है तो वो बहुत टेक्निकल पूछेगी, या फ्लीट मैनेजमेंट है, एंग्लो है तो बहुत इजी क्वेश्चन बेसिक पूछेगी, ऐसा कुछ होता नो है? नो नो, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने शेवरॉन में सेलेक्टेड स्टूडेंट ऐसे देखे हैं जिनसे जीरो टेक्निकल क्वेश्चंस पूछी गई है, जीरो यस टेक्निकल, एक भी टेक्निकल नहीं, ओनली पर्सनल पूछी गई, वो बंदा सेलेक्ट हो गया। ओके, मैंने फ्लीट मैनेजमेंट सेलेक्टेड कैंडिडेट ऐसे देखे हैं जिससे सिर्फ टेक्निकली पूछी गई। ओके, यस सो सर। ये टोटली इंटरव्यूअर पे भी डिपेंड करता है, ये टोटली इंटरव्यूअर पे डिपेंड करता है एंड आपके रिज्यूमे पे भी डिपेंड करता है। यस सर। क्लियर, आप किस तरफ इंटरव्यू यस ले सर। जा रहे हो वो आप पर भी डिपेंड करता है, बट मोस्टली ये इंटरव्यूअर पे डिपेंड करता है। कोई कोई इंटरव्यूअर टेक्निकल वो पूछेंगे ही पूछेंगे। ओके, बट ऐसे कुछ नहीं होती है, इस कंपनी में इजी पूछी जाती है, इस कंपनी में टफ, एंड ऐसे प्रिपेयर मैं करने नहीं बोलूंगा। ओके, अगर आप पूरी एक ऑन एन एवरेज पूरी ऑक्सिलरी मशीन्स की बेसिक्स प्रिंसिपल आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग बेसिक्स प्रिंसिपल, आपको मैंने यस अभी सर। इंटरव्यू में सब चीज बेसिक्स पूछा, कोई भी ऐसी मैं लाइक क्लास 4 के क्वेश्चंस नहीं पूछा, क्लास 2 के क्वेश्चन नहीं पूछा। ओके, फर्स्ट थिंग ऑक्सिलरी मशीन्स के बेसिक्स प्रिंसिपल याद रखो। सेकंड थिंग आईसी इंजिन्स के कंपोनेंट याद रखो, पिस्टन का क्या काम है, लाइनर का क्या काम है, लुब्रिकेशंस कैसे होती है। ओके, लूबल लाइन डायग्राम पता होनी चाहिए, जैकेट कूलिंग वाटर क्या होती है। ओके, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। इंटेलिजेंट इंजन क्या होती है, स्लो डाउन कंडीशंस क्या होती है, स्टॉपिंग कंडीशंस क्या होती है, एक्सप्लोजन। ओके, मींस मैराथन लेक्चर्स देख लो, ऐसी इंजन्स हो जाएगी एज ए टीएमई लेवल। ओके, एंड थर्ड यस थिंग सेफ्टी, मींस फायर की क्वेश्चंस आ गई। ओके, तो अगर आप इतना प्रिपेयर करते हो तो आप सेफ पोजीशंस पे हो, सेफ कंडीशंस पे हो। क्लियर, ठीक है सर। एनी डाउट? नो सर। चलो, तो मैं दूसरे स्टूडेंट्स को इनवाइट करता हूँ। ओके, यस सर, थैंक यू सर। सर आप काफी हेल्प कर रहे हैं सर हम लोग। ये लोग ढूंढ रहे थे सर मॉक करने के लिए, आपस में हम लोग मॉक करते थे सर, तो लेकिन उतना अच्छा बिल्कुल होता किया नहीं था करो, क्योंकि सर वो हाँ किया करो, ये बट किया करो, है ना, इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस नहीं सर, बिल्डअप होता है। लेकिन सर फिर भी दोस्त होते हैं वो तो सर उतना मतलब उतना उनके साथ नहीं हो पाता। हाँ, ठीक है सर। चलो फिर, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड, राइट? यस सर, थैंक यू सर। यस यू वेलकम, थैंक यू। सर।